Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 85 for that topic sexual reproduction in flowering plants. Now just we have completed the part of pollination in the flowering plants and also we have seen about the different agents of pollination. Okay, now we have to learn this very important article before learning the fertilization. What is that? Pollen pistil interaction. Pollen grains are produced by the anthers, you know. And pistil is the gynoecium, that also you know. This is that gynoecium, all that carpel, etc. This is called as the pistil. It has got these three parts there, you know. One is the stigma, then other is the style, and third is the ovary. And this ovary is containing that ovule which contains the female gametes. Okay, that is containing that female gamete A. Okay, this is ovule, you know. So now we are on the way of that pollination. Female gamete egg is produced inside this ovule. Egg is produced inside this ovule which is present in the ovary. Okay, and male gametes will be produced inside the pollen grain. And that's why the first very important step was that the pollen grains should get deposited on that stigma. Okay, this is that pollen grain. And this process we have just completed, we have studied. This process is known as what? They are known as pollination. Okay, when it occurs within the same flower, it is self-pollination. When it is carried from the flower of other plant of the same type, it is called as the cross-pollination. All we have discussed. Now, what is the problem there? Pollination may be carried out by the air or by the water or by that any animal like insect, bird, etc. But pollination does not give guarantee. It does not give guarantee. What guarantee? That right type of pollen grain will get deposited on the that stigma. What do you mean by right type of pollen grain? Right type means what? That means suppose this is a pea plant. Then the pollen grain from other pea plant or the same pea plant should be there. Okay. If this pollen grain of pea plant will fall on that stigma of the pea, it is called as the right. Or that biological word for that is compatible. Isn't it? Then they will be compatible pollen grain. But many of the times the pollen which is falling there will be a wrong type. Now what do you mean by wrong type? Suppose this is a pea plant stigma. Okay. And suppose that sunflower pollen grain has been deposited on the stigma. The pollen grain deposited is from sunflower or from rose plant or any other. Number of flowering plants are there. Then what will happen? Then that will be called as the wrong type. Okay, and now that is biologically called as incompatible. They are biologically called as what? Incompatible. Isn't it? ये पहले समझ में लो अच्छी तरह से. राइट टाइप का अगर गैमेट वहां पे मिलता है तो फर्टिलाइजेशन होता है, नहीं तो नहीं होता है. दैट वी नो. Isn't it? Suppose this is the pea plant, egg is of pea plant, this is stigma of the pea plant in the pistil. Okay, इसको सबको pistil कहते हैं. The pollen grain deposited should be of pea plant. Same pea plant or other pea plant. Okay, then only fertilization will be effective, pollination will be correct. That is called right type. उसे compatible कहते हैं. अगर नहीं है तो rejection हो जाएगा. That is incompatible, wrong. यानी pea plant का stigma है और sunflower या rose और दतुरा और any other I will say. दूसरे किसी भी flower का अगर pollen grain वहां पे आता है तो अगर वो स्टिग्मा पे आ जाएगा
then that will be called as the incompatible, that will be called as the wrong type of pollination. Okay, so particularly this incompatible, whenever this pollen pistil interaction involves that capacity or ability of the stigma. Stigma has got ability to accept and promote, okay, or to refuse or reject the pollen grain. ये जान लो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. यानी अगर इनकॉम्पेटिबल है तो स्टिग्मा क्या करने वाला है? इट विल रिजेक्ट दैट पोलन, रॉन्ग पासवर्ड कहेगा. अगर सही है देन इट विल एक्सेप्ट दैट एंड प्रमोट दैट. तो देखो यही तो आज हम करते हैं, ये तो नेचर से आया है दोस्तों. आज हम जब ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए जाते हैं या पर्टिकुलर एटीएम काउंटर पे जाते हैं तो वहां पे पिन हमको डिमांड किया जाता है, इजंट इट, कार्ड देने के बाद. एंड इफ दैट पिन विल बी करेक्ट मैच, वॉट एवर द पिन में बी देयर, वो अगर करेक्ट मैच हो गया देन ओनली द फर्दर ट्रांजेक्शन विल बी देयर. अदरवाइज वहां पे आ जाएगा इनकरेक्ट पिन. और बार बार अगर 1 2 3 अटेम्प्ट्स में अगर फेल हो गए तो वो कार्ड ही ब्लॉक कर डालेगा. तो वो जो है आज हमने कंप्यूटराइज सिस्टम में जो यूज किया है, द सेम इज फॉलोड बाय द नेचर. यानी अगर वो रॉन्ग टाइप का पोलन ग्रेन है इट विल बी रिजेक्टेड. पासवर्ड मांगते हैं बहुत बार हमको, पासवर्ड अगर गलत आ गया तो इनकरेक्ट पासवर्ड, वो जो डॉक्यूमेंट है वो खुलेगा नहीं, इजंट इट. तो वैसा ही है, ये इनकरेक्ट हो गया, इट विल बी रिजेक्टेड. रिजेक्ट होने के बाद क्या हो जाएगा? इट विल बिकम ड्राई एंड दैट विल बी डिस्कार्डेड. मर जाएगा वो पोलन ग्रेन, हम गलत जगह पे आ जाएगा बोलेगा, इजंट इट. बट इफ इट इज करेक्ट पोलन ग्रेन, P to P, sunflower to sunflower, rose to rose, if it is correct and match properly, compatible अगर है, then definitely that is accepted by the pollen grain. Not only accepted, it will be welcome, isn't it? ये बारात के जैसा है. देखो ये बारात लेके आए हैं पोलन ग्रेन, दुल्हन तो यहाँ पे बैठी है, एक यानी दुल्हन है, वो तो बहुत अंदर सज धज के बैठी है अभी. एंड वो दूल्हा जो है वो बारात में आया है. पर बारात अगर सही जगह पर जाती है तो यूज है. कई बार ऐसा देखते हैं, अगर राइट, अभी 2 3 रहते हैं वहां पे बैंक्वेट हॉल, अगर वो जो आने वाला कार है या बस है ऑडिट में भी, वो अगर गलत जगह पे गया देन वो कहेंगे भाई ये शादी अलग चल रही है, आपका दूसरी तरफ होगा, isn't it? So अगर सही है तो डेफिनेटली उनका बैंड बजा के और कुछ उनका फ्लोरल बुके देके उनका स्वागत करेंगे. एंड ऑल दैट विल बी कैरीड इनटू द बैंक्वेट हॉल विद द रिस्पेक्ट. सही है तो यही किया जाता है पोलन ग्रेन के लिए स्टिग्मा द्वारा. द स्टिग्मा इज डूइंग द सेम थिंग. इट विल जस्ट एक्सेप्ट दैट पोलन ग्रेन इफ इट इज ऑफ राइट टाइप, compatible. Not only that, it will produce a sugary secretion. The stigma will produce a sugary secretion by which the pollen grains will get stimulated and they will start the germination. वो भी खुश हो जाएंगे और पोलन ग्रेन जो बारात में आए हैं, थक के आए हैं, टायर्ड हुए हैं, they will get stimulated, पूरे बाराती जो है वो, and they will undergo germination to produce what? To produce pollen tube by vegetative cell. pollen tube तैयार की जाएगी vegetative cell द्वारा, vegetative cell, and that particularly 2 male gametes will be produced by whom? By generative cell.
ये जर्मिनेशन भी हो जाएगा। अब आप कहेंगे इनको समझेगा कैसा? द रिसर्चर्स हैव शोन दैट दिस इज पर्टिकुलरली डन विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। कुछ केमिकल्स भी अब ये रिसर्च करके मालूम पड़ रहे हैं साइंटिस्ट को, दैट स्टिग्मा एंड दैट पर्टिकुलर pollen grain must have some chemical matching there. अगर वो केमिकल मैच हुआ एक्सेप्टेड, अगर नहीं हुआ रिजेक्टेड, पासवर्ड के जैसा. And that chemicals are also nowadays discovered by that botany is there, biology is there. तो ये भी अच्छी जानकारी है. ओके, तो एक बार अगर वो सही होता है, then pollen grain starts germination. जनरली पोलन ग्रेन जो होता है वो टू सेल्ड स्टेज में होता है. वन इज द वेजिटेटिव सेल, वन इज द दैट जनरेटिव सेल, isn't it? वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल कहते हैं. एंड देन थ्रू द जर्म पोर यू नो दैट ट्यूब सेल विल प्रोड्यूस द ट्यूब. जर्मिनेशन जब हो जाता है, द ट्यूब सेल विल प्रोड्यूस पोलन ट्यूब. और ये पोलन ट्यूब जो है वो ये स्टिग्मा को पियर्स करके नीचे आ जाएगा. द पोलन ट्यूब विल कम डाउन फ्रॉम दैट स्टिग्मा स्टाइल अप टू व्हाट? अप टू द ओव्यूल. ओके, एंड बाय द टाइम दैट जनरेटिव सेल विल प्रोड्यूस टू नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स. तो ये हमने लर्न किया है व्हेन वी हैव स्टडीड जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन. फर्टिलाइजेशन के टाइम और लर्न करेंगे. पर ये जो पूरा सीक्वेंस है इवेंट्स का, पॉलिनेशन, आफ्टर पॉलिनेशन, recognition of the pollen grain by stigma, compatibility checking by the stigma, and then welcome of that stigma by giving sugary secretion, and then germination of the pollen grain to produce pollen tube and male gametes required for fertilization. All that sequence, all that series is rightly known as what? Pollen pistil interaction. उसको कहते हैं pollen pistil interaction. So I am sure that you must have understood this part very properly. तो एक बार रिवाइंड करके आप देख रहे हो. वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट. नाउ वी शैल लर्न फर्टिलाइजेशन लेटर ऑन. ओके, सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो to your friend circle and subscribe to my YouTube channel XIIth Biology. You will get every day one MCQ in the form of shorts. Thanks a lot.